स्मॉल कैप HBL इंजीनियरिंग, जो पहले HBL पावर सिस्टम के नाम से जानी जाती थी, इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ बैटरी मैन्युफैक्चरर टू अ डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी with a focus on four key products: industrial and defense batteries, railway electronics, defense systems and e-mobility। पिछले 3 सालों में HBL इंजीनियरिंग का स्टॉक 3 गुना हो गया है। अब आगे क्या होगा? क्या ग्रोथ जारी रहेगा या एक्सपेक्टेशन अभी कुछ ज्यादा हो गई है? We will address 5 big questions that are there in every investor's mind। HBL का बिजनेस बदल रहा है, क्या यही HBL का फ्यूचर तय करेगा? कंपनी के नए इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में बहुत पोटेंशियल दिख रही है, लेकिन खतरा या रिस्क कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में? FY26 की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखकर खुश होना चाहिए या थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है? स्टॉक की वैल्यूएशन क्या बहुत आगे चली गई है या अभी भी दम बाकी है? और फाइनली FI एंड DI की बदलती हिस्सेदारी, स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल मनी क्या कहती है HBL इंजीनियरिंग के बारे में? On this channel, Stock Stories and Skills, we decode businesses by doing in-depth business analysis. We help you understand company's moat, future growth trajectory, and risks and challenges ahead. So let's start today's fundamental analysis of HBL engineering. So let's first understand the business mix of HBL engineering. एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है कंपनी में जो समझना बहुत जरूरी है। So I have got two pie charts. One is the FY23 and second is the FY26 charts. Now, if you look at industrial battery, in FY23 the share of industrial battery, जो traditional business है company का, वो 74% था revenue में. Now, same thing if you see here, it has gone down to 32%. Second, if you look at electronics, this is the new business, the KAVACH. We'll come back to the KAVACH part. Was 13 to 18%. Look at here, it has gone to 65%. So company is slowly and gradually moving into electronics, which is a high margin business. Then defense and aviation battery, which was 13%, now it's 2.4% because the share of electronics has gone up. So तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है. Number one is the strategic shift that is happening towards high growth electronics business. And second, now there is a diversified portfolio of industrial battery, electronics, aviation. So ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है to understand the HBL engineering stock analysis. Now कंपनी का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो है लीड एसिड बैटरीज का. Now इसमें जो कंपनी सेक्टर को सर्व करती है वो है टेलीकॉम, रेलवे, UPS systems, data center and oil and gas. So जो बैटरीज हैं कंपनी की, जो लीड एसिड बैटरीज हैं, they provide to these companies, telecom, railways, UPS system, data center. They also have nickel, cadmium, batteries, and sectors are the same. Railways, UPS, data center, oil and gas. So if you look at the traditional business, it's all about industrial batteries. Now coming to the HBL Power Solution for Indian Railways, let's first understand the project KAVACH, because that is very important, because this word KAVACH will come many times here. So first let's understand the KAVACH project. Now KAVACH है Indian Railways का खुद का एक own safety system. अगर कोई एक ट्रेन ड्राइवर कोई सिग्नल मिस कर देता है या कोई एक एरर हो जाता है, तो ये सिस्टम अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है एंड ट्रेन को रोक देता है. और ये सिस्टम इंडियन रेलवे ने खुद बनाया है. इंडियन रेलवे की एक ऑर्गेनाइजेशन है, RDSO है, जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसको. सो RDSO ने ये कवच सिस्टम को डिजाइन किया है. कवच सिस्टम ये कोई HBL इंजीनियरिंग लेके नहीं आया है. HBL इज जस्ट वन ऑफ द अप्रूव्ड वेंडर है देयर, फॉर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल equipment for this mission critical project. So apart from batteries, जो HBL already Indian Rail को supply करता है, HBL is now also supplying critical equipment on the safety side. और last 2 साल में HBL Engineering has been a biggest beneficiary of Indian Railways KAVACH project. Now अब समझते हैं कि HBL Engineering के ये products क्या हैं जो वो रेलवे को supply करता है apart from batteries and all. Now, one is the signaling, product. So, powering safe and efficient train operation. ये देखो, ये signaling, product है, DC power supply.
ये सिग्नलिंग बैटरीज हैं, ये एक्सले काउंटर है, ये ट्रैक सेक्शन मॉनिटरिंग करता है, देन सिग्नल लैंप्स भी आपने सब जगह देखे होंगे, देन ये रिले इंटरलॉकिंग है, ये पॉइंट मशीन्स हैं, ये भी HBL सप्लाई करता है। नाउ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो कवच के अंदर आते हैं, रैपिड टैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी रैपिड रीडर है, ये देखो कवच ऑन बोर्ड यूनिट है, तो यहाँ पर भी सेम है, ऑन बोर्ड यूनिट स्टेशनरी, और यहाँ हमने वो दिखा रखा है, ये LC स्टेशन कंट्रोलर है। सिमिलरली ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न रेलवे, ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये सप्लाई करती है, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, हेल्थ मॉनिटरिंग, automatic fare collection, depot management and fleet optimization. So you can see, the kind of or the range of product that the HBL Engineering is supplying, to Indian Railways. Now HBL also claims to be in advanced, battery solutions. So one is the aircraft. यहाँ भी इनके product, use होते हैं, NICD, batteries for aviation, as you can see here. Similarly missiles में भी हैं HBL की batteries. आर्मर्ड व्हीकल्स अगर देखें तो यहाँ पर रग बैटरीज हैं फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, यू कैन सी वेरी रग बैटरीज है। सिमिलरली हाई पावर NICD बैटरीज फॉर अंडर वाटर पॉपुलिज्म एंड ऑल्सो बैटरीज फॉर सबमरीन. So you can see the range of batteries that HBL Engineering is providing, to different sectors. Now HBL में ये जो शिफ्ट हो रहा है, जो हमने देखा फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैटरीज टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर प्रोडक्ट, देयर आर आल्सो रिस्क्स. सो व्हाट कुड गो रॉन्ग इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, व्हिच इज द फास्ट इमर्जिंग business for HBL Engineering, and it is also a very high margin business. So let's look at some of the risks. See, one is the tender delays. Now HBL's railway electronics business depends heavily on government tenders and project execution timeline. यहाँ पर पेमेंट भी डिले होते हैं, यहाँ पर there are a lot of issues when the tender comes. So there is a delay in approvals, ordering or commissioning. They can postpone revenue recognition for HBL. So HBL में काफी volatility हो सकती है उसके revenue में because of the government contract. Second is the execution risk. Now winning a large contract is only one of the first step. When you are working for the government. Delays in manufacturing, installation, testing or commissioning could impact margin and cash flow. Sometimes payment ही नहीं आते हैं, payments comes in part. तो वो भी एक बहुत बड़ा issue है. Technology and version upgrades. Now KAVACH technology continues to evolve. ये तो रेलवे का प्रोजेक्ट है और रेलवे के standards हैं. So future version or revised specification may require additional R&D, product design and fresh certification for HBL engineering. So ऐसा नहीं है कि भाई कवच के एक सेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और HBL सप्लाई कर रहा है. टुमारो देयर मे बी चेंजेस इन द कवच टेक्नोलॉजी. Customer concentration, another big risk. A significant portion of electronics revenue is linked to Indian Railways, only one customer and other government entities, now exposing the company to policy decision and budget allocation. So there is a huge concentration risk here. Order lumpiness. Railway electronics projects are milestone based rather than recurring. So revenue and profit can fluctuate depending on execution schedules and project completion. So as you can see, there can be tender delays, execution risk, technology and version upgrades, customer concentration, one big company and one big client, order lumpiness. Now, is the FY26 growth sustainable? Now, if you look at FY26, 3303, 34% and 814 crore profit. Now, if you look at the company's performance in the past, the revenue was very stagnant, and we have seen a sudden rise only in the last 2 years. Now look at here, FY22 1,236 crore revenue, FY23 1,300, FY24 2,200, FY25 again went down 1967, FY26 3303. OPM margin also 11,99, 34%. So is it sustainable, this kind of margin? Net profit again 94, now 814 crore. Is because of the order lumpiness, is because of the huge order that the company has got, and now company is valued based on this latest number. But the big question is this sustainable? This kind of numbers, are these kind of numbers sustainable? However, the sharp jump in revenue and margin is driven by execution of large electronics order
the KAVACH project. This is project based, not recurring. Now, this is very important here. The revenue which we are seeing here is the project based. It's not a recurring revenue. And this point is also very important. FY26 growth is exceptional, but driven by large one-time project. Sustainability will depend on consistent order inflow and execution of future projects. So I suggest investors should keep this in mind before taking any position in this stock. Now, just to make one or two points here on the sustainability, part. Number one, the scale is missing. The big growth has come only in the last 3 years. Now, if you see the last 10, 15 years performance, company's growth was very stagnant. Now, other thing which I want to highlight is the raw material part. The raw material here constitute almost 40 to 50%, where there is a lot of volatility. Lead calcium, suboxide, these materials are very volatile. So these can impact the prices and the margins, for the company. So one has to be very careful about HBL engineering because the kind of pressure it can get from the raw material side, and that can eventually impact the margin of the company. Now let's look at the valuation. Is SBL overvalued? So if you look at price to earning, the current price to earning is around 26 to 27. And if you look at the last 3-year range, it is around 25 to 60x. So it looks like near the lower end of its own, trading history. Now here I just want to make it very clear, this video is only for educational purposes. In case you want to buy, sell and hold HBL engineering, do consult your financial advisor. Now if you look at EV to EBITDA is 19x, 3-year median is 19x to 42x. So that also in a way shows that is within the range of its last 3-year valuation. Price to book 9x to 11x. Here also is 9x to 12x. So consistently rich valuation, and it has never traded cheap on book value. Market cap to sales 6.8x. So it is 4x to 11x. So high for batteries plus electronics business. So this valuation factors in the kind of risk because it's a one project thing. So in a way valuation also shows it here. Now this chart is also very important. If you see FI, there are no major FI, it's 5.6. If you see DI mutual fund is 0.97. So no institutional investors are interested in this story. Now this is a question investors should ask. If this is going to be a big story of tomorrow, why mutual funds are not interested? Why FIs are not interested? There is no credible FI in this company. So as you can see, HBL Engineering is no longer a battery company. It is not competing only with Exide and Amar Raja. It has diversified into electronics and other sectors, especially defense. So it has now got into a new territory where you have, Siemens of the world, Bharat Electronics, because railways, defense and electronics is one sector. where there are large companies. और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो कवच प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का, उसमें एचबीएल की कोई मोनोपोली नहीं है. देयर हंड्रेड्स ऑफ अदर सप्लायर्स एंड प्लेयर्स. और एचबीएल के जो बड़े कंप्यूटर आने वाले दिनों में रहने वाले हैं, फर्स्ट इज द भरत इलेक्ट्रॉनिक्स. भरत इलेक्ट्रॉनिक्स इज द इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, और वो डिफेंस, रेडार, रेलवे हर जगह में उसकी प्रेजेंस है. वैसे ही सीमेंस है जिसकी ग्लोबल एक्सपर्टीज है, और स्पेशली रेलवे में है तो वो सबसे बड़ा किंग है. सो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि एचबीएल इंजीनियरिंग अपना एक स्पेस कैसे बनाता है, स्पेशली इन द रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सेक्टर. एंड जस्ट टू मेक अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. इन केस यू वांट टू बाय, सेल एंड होल्ड HBL engineering, I suggest do consult your financial advisor.